Yeah. So I hope in the last uh, class we have learned few things, not just few things actually. We have learned many things about the deep learning. Am I right? And the practicals you have done, and I hope you have understood few things there. Any problem you have faced? Am I audible? Hello, am I audible or not? Yes, sir. Well, then I have asked you that in the last internship class, I have discussed many things, around 7 to 10 practicals on deep learning. So have you understood everything? Have you faced any difficulty in the last three tasks that I have given? From your submission, I could see that there is no problem. But the main thing is that have you understood really, or you can tell me. If not, that we can go ahead. So the silence, I can assume that you have got everything. Now, again, I'm revising few topics, then coming to few practicals, then I will ask you a few things, and then we'll go as usual with these practicals. So deep neural network. Okay. So this term, deep, what does it mean? I told you, right? We have input layer, we have output layer, and then we have this hidden layers, right? So this deep neural network, that we may include more than one hidden layer between this input and output layer. Got it? And the depth is a key factor that distinguishes our DNN from traditional neural network. Okay. So depth or the deep, this is the term we use to show that how many hidden layers are there in this particular deep neural network. Is my voice coming properly? তাহাঁতক অলপ লাহে লাহে কথা হেৰি কৰিবলৈ কৈছো। My voice is coming or not? Hello? Yes, sir. Okay, please respond. Otherwise, how could I know that you are listening or not? Huh? So in a offline class, I don't think that you will face me in the same way. Okay. So I want my scholars or students to be very responsive and active. Otherwise, I will just suggest one thing, that you can drop the class. Anyway, so there are two layers you have seen, and the term deep means we are including more than one hidden layer. This part is clear? Okay. Okay. Now, DNNs are powerful category of ML. We implement here with the help of many layers. An example, like I have given one example in the last class, that it can analyze many images, right? How it is possible? Because it learns the features and refine the features in every layer. And based on that, we can expect a good accuracy out of its means its model output, right? So accuracy will be much higher than the others. Right. Some examples are there, like we use DNN for identifying the sound. Suppose I'm not taking the lecture. I'm Dr. Dibos Dibora. How could you identify it? Say with a model. So then speech recognition will be required, and speech recognition as well as means we need to classify the different vocal or different sounds, and accordingly we can come to the conclusion that yes, this is who like Dr. Dibbo who is taking the class, or this is suppose say Dr. Dippal who is taking the class, like that. So this is also an example that where we can use DNN. Then so many examples are there, like self-driving car. How many of you heard about the self-driving cars?
Have you heard it or not, self-driving car? Yes, sir. So have you ever thought that what technology we use in this type of self-driving cars? There we use, yes, please. Sensors. Okay. We use deep learning there. Okay, remember, we use deep learning there, computer vision there. So as a whole, because of this, now the car is like driverless car. It can decide when to stop, how to go, when to take left or right turn, like that, right? And could you remind, or could you recall this term peace? Peas. You have to. You tell me what is the meaning of peace. I'm expecting a correct answer from you. What is peace? I have explained with 2-3 examples. P stands for performance measure. E stands for environment. A stands for accessor. S stands for sensor. Okay. Anyone Sir, else? it must be actuators. A stands A for is actuators. and S. Actuators. Yes, As sensors. sensors. Can you say something about that? How PEAS determine? What we determine with the help of peace? That for the name itself, what is that? Performance, right? We build an AI model. Then next thing is that we have to determine whether that how perfectly this model is working or not. Is it so? Yes, sir. Then, as per your opinion, for self-driving cars, what will be P, what will be E, what will be A, what will be S? Sir, P would be the safety, like um, how much a car can, how much a car can cover a distance at uh, how much petrol, like, and environment would be the some obstacle in the road or maybe traffic signals. Okay. And actuator would be brakes, accelerators, and sensor are like camera, GPS. Okay. Very good. I think who is this? Sumi, right? Sir. Yes, Okay. sir. Okay, good. So for any like how she said, she is correct. For any AI model, uh, any AI model, just 1 second. I can't remember. Okay. So for any AI model, what happened? We have to determine that whether it is acting means as per our requirements, or is it means able to reach the satisfactory result or not. These things we have to find it out before we release this to the market, right? Like we have Teslas. So first, what they will do, self-driving cars, we need to measure that whether performance is okay or not, right? Performance means say from Jorhat to Guwahati, I want to book a ride for with this type of say self-driving cars, but it takes say 12 hours to reach Guwahati from Jorhat. Is it okay then? No, sir. No, right? So
That is not okay. We generally think that 5 to 6 hours or at max 7 hours is okay. But beyond that, we cannot consider it as a good thing, right? Then next thing, suppose there are so many speed breakers are there. When a human drives, he usually slows it down so that you'll not get it, some kind of jogs, right? So self-driving car, as it is a driverless car, it should automatically decide when to slow. But without that, if it suppose in a say very big speed breakers, it speeds up like 80 km per hour. Okay, and you feel good jerkings. So can you consider that is a good ride? No. Yes or no? Of course, no. Sir, could you repeat the question? Yeah, my question is that suppose this is a self-driving car. It tries to pass this speed breakers, right? But at the time also, it didn't slow it down. It went like 80 km per hour. So whether we can consider it as a good self-driving car, or you can consider something else. Sir, it won't be good Why? because if you drive too fast at the speed breaker, it might like might not be safe. Just one minute. Oh, right. Yes, we cannot consider it as a good one because we need comfort, right? Whenever we book a ride, then the main purpose is that should be a comfortable one. Otherwise, we will not be like to means go twice with that particular vehicle. Yes. Yes, sir. Then E stands for environments, right? E stands for environments means what are the things that we have to consider when a car is driving, right? It is not a good picture. So when a car is being driven, what are the things that we have to consider? Sir, other vehicles. Other vehicles, right? Traffic signals. Very good. Traffic signals. Traffic signals should be there. Then Roads. roads, and then suppose pedestrians are there, right? Some suppose cow or this type of livestock coming suddenly. So all these things together constituting what? Environment. Are you getting my point? This is a very important thing because when we go for discussing any AI enabled system, we have to consider this piece. जिसको भी नहीं मिला है ये पहले, हो सकते हैं आप लोगों में से 2-3 जन ने मिस कर दिया हो, तो ये PEAS इसको you have to note it down. Very important. So environment, from the environment we got this particular input that we also can call as perception, right? Then based on those input, what the car has to do, that with the help of some actuators, right? Suppose suddenly one pedestrian comes in front of that vehicle, and that vehicle is a driverless car, that is self-driving car. That if it doesn't brake, doesn't push the brake, then what will happen? Accident will happen, right? Yes or no? So that part also should be tested. So actuators are the things, or you can say, with the help of which our AI enabled model or agent do something with respect to the input received from the environment, right? So these are the things that we have to consider when we
develop some AI models or AI-enabled some system. Either it may be a car or it may be any expert systems. Okay. So self-driving is clear. So you can go for another one. You may note it down, vacuum cleaner. You have to find out the piece for the vacuum cleaner. Okay. Have you noted it down or not? Yes, sir. Tomorrow in the class, I may ask you what are the P's for the vacuum cleaner, AI-enabled vacuum cleaner. Okay, so, so you have to go through it properly. And please note it down this term, P's, और घर में पूरा term का हर एक लेटर का full form एक बार फिर से लिख लेना, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है. Now, next come to this. There are so many other examples like online translation software, voice assistant, image and voice recognition software, chatbots, so many chatbots you are recently using, like say, suppose ChatGPT. How many of you are using ChatGPT? How many of you are using Chat? Sumi raised hand. Yes. You can talk. You can give the response. Okay. So my question is that have you tried to know that how does this ChatGPT works? कैसे काम करते हैं ये? How it works? How this ChatGPT works? Have you tried to know it? If you did not, then तो फिर घर में आज थोड़ा सा एनालाइज करना. मैं तो आप लोगों को बताऊं. हाँ, yes, sorry. ChatGPT uses generative AI. Generative AI, right? और थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताओ ये क्या यूज करते हैं. Have you heard about LLM? देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोगों को सब कुछ आना चाहिए, बट फिर भी कुछ कुछ चीज जो यूज कर रहे हो ना उसके इनसाइड टेक्नोलॉजी यू हैव टू नो. ठीक है, इसने जेनरेटिव एआई बोला, ठीक है, आई एग्री विथ हर. बट उसके स्पेसिफिक में और क्या क्या यूज होता है, क्या क्या यूज किया जाता है उसमें, कैसा मॉडल है, ये ट्रांसफॉर्मर है या एलएसटीएम है. थोड़ा सा कॉपी में चैट जीपीटी का टेक्नोलॉजिकल मॉडल लिखना अभी इस क्लास के बाद, और आप ग्रुप में पेश करोगे. समझ में आ गया मेरा क्वेश्चन? कहीं भी मिल जाएगा, नेट में मिल जाएगा. मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि तुम लोगों को वो टर्म्स आता है या नहीं. यू शुड बी अवेयर विद दोस टर्म्स. जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर, यू शुड नो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर. जैसे ये इन्होंने बोला कि जेनरेटिव एआई, व्हाट डज इट मीन बाय जेनरेटिव एआई, ये टर्म्स आप लोगों को आना चाहिए. एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, व्हाट इज दैट? ठीक है, समझ में आ गया मेरा क्वेश्चन? तो अभी इस क्लास के तुरंत बाद तुम लोग एक पेज में चैट जीपीटी कैसे काम करते हैं, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड चैट जीपीटी, लिख के उसमें ग्रुप में पेश करोगे अपने नाम सही. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Very good. So this is ChatGPT is again an example of narrow AI. Okay, and we'll see that how it works, but before that you will complete that part. Now let's go ahead. तो ये सब है जहां पे हम एआई यूज करते हैं, डीप लर्निंग यूज करते हैं. अब लॉस फंक्शन के मैंने आपको लोगों को बताया था कि व्हाट डज इट मीन बाय लॉस फंक्शन, इफ यू कुड रिकॉल प्रॉपरली. लॉस फंक्शन का मतलब ये था जो भी आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू है, प्रेडिक्टेड वैल्यू मतलब बाय योर मॉडल, और जो एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉस और एरर. राइट. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला था ना उस दिन एमएससी यूज करते हम. एमएससी का फुल फॉर्म क्या था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएससी? minimum squared error. मिनिमम और मीन स्क्वायर्ड एरर. Anyway, very good, you have tried. So that is
how we calculate. There are so many loss function. We'll go through that. Loss function is what? It is used to measure the discrepancy between the predicted and actual values, enabling the network to learn and improve its performance during training. Okay, so you can see in this diagram, this is the weight, this is the loss. The value of the loss function tells us the goodness of a particular set of weights. That means whether the weights we have taken are okay or not. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि these weights are the important part. जो बिग प्रोपागेशन भी करते हैं हम, तो हम क्या अपडेट करते हैं? वी अपडेट द weights, right? So the value of the loss function tells us the goodness, कितना अच्छा weights हमने consider किया है. The gradient or derivative of the slope, ये जो gradient दिखाई दे रहा है आपको, that tells us the direction we need to move towards to reach the minima. I hope you know about local minima and local maximum. Minima तो पता है ना आप लोगों को? Yes, sir. Okay, very good. So the weight at the minimum of the function that minimizes the loss. यहाँ पे तो जो minimum है, local minimum ये है कि जिससे ये loss minimum हो रहा है, उस particular value के perspective जो भी weight होगा, हम उस weight को consider करते हैं. The model being developed needs to be continuously assessed for potential errors as part of the optimization. Optimization करना का मतलब ये है कि हम बार बार चीजों को अपडेट करते रहते हैं ताकि हमारे पास जो लॉस है वो मिनिमम हो जाए. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम when someone asks you what is optimization you can consider is as the best possible value for which the loss is minimum in this case. Okay, now some examples here given. Say assign labels to the images, say 0 to horse, 1 to the human, classify images of horse and humans in this way. And suppose if the model receive an image of a horse and identify the output as 0.25, then what will happen? तो एक हॉर्स के लिए उसको वैल्यू मिलना चाहिए था आपका कितना? 0, बट उसने कितना आइडेंटिफाई किया? 0.25. So this difference 0.25 minus 0 is our error. Okay, so this is the error. Every output undergoes this process, and the error is gathered from each individual output during the learning iteration. Error पूरा clear हो गया ना? There is no doubt on the error. Error part is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now loss functions are the way by which we measure these losses. And you can see here in this diagram, these are the regression loss and classification loss. Regression के बारे में मैं पहले ही बताया था आप लोगों को. Regression when we try to predict a continuous value. जैसे कि कल, suppose कल कितना डिग्री टेम्परेचर होगा at max, वो वैल्यू हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं 37 डिग्री, ये एक रिग्रेशन टास्क है. ठीक है, सपोज मैंने ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश किया कि कल बारिश होगी या नहीं, टुमारो इज इट गोइंग टू रेन और नॉट, मींस आंसर आपको क्या मिलेगा? आइदर यस और आइदर नो. तो इस टाइप का लेवल बेस्ड जो टास्क होता है, प्रेडिक्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन. और इस टाइप का वैल्यू बेस्ड जो प्रेडिक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन. और उसमें जो डिफरेंस मिलता है हमें एक्चुअल और प्रेडिक्शन के बीच, उसी को हम बोलते हैं रिग्रेशन लॉस, एंड क्लासिफिकेशन के केस में क्लासिफिकेशन लॉस. क्लियर? So regression loss, the neural network regression predicts continuous value using input features and use a suitable loss function. Say these are the salary, these are the experience. So ये जो आपको दिख रहा है, ये जो line है, this line is known as regression line. इस लाइन के आसपास वो वैल्यू मिल रहा है, वो जो डिफरेंस है वही हमें लॉस बताते हैं. ठीक है, सो आप रिग्रेशन लॉस के लिए हम दो पार्टिकुलर टाइप यूज करते हैं. एक को हम बोलते हैं एमएई और एक को बोलते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर.
याद रहेगा, एक है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर और एक है आपका मीन स्क्वायर्ड एरर. Okay, but both are different. Okay, absolute मतलब क्या होता है? Suppose 2 minus 5, what is the value of it? -3. -3. Minus 3. But if I put here, what will be the value? 3. 3. 3. Okay, so this is known as what? Absolute. Is it clear? This is known as absolute. So we always take the positive things. Now, just a minute. Mean absolute error measures the average absolute difference between the predicted and actual values in the regression task. And the formula is mean absolute error, ये लिख लेना या तो screenshot ले लेना, 1 by n summation of y minus absolute value of y minus y dash. Right? This y is the actual target value and y dash is the predicted value, and y minus y dash is the absolute difference between the actual and predicted value, and this n is the total number of observation. Any problem with this? I think no, right? ये है mean absolute error. Then this is just an example. Here say actual value, y predicted value is given. You are just trying to calculate actual. So 10 minus 10.2 minus 9.5. How much? 0.8. Similarly 7.169 less 11.5 11.1. How much? 0.4. तो हम क्या करते हैं उसके बाद इनको add करके divided by how many values are there? 1 2 3 4 5 5. So answer will be 0.88. Is this clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, we'll see that how to implement it. It's very simple. Next one is mean squared error. Mean squared error. It measures the average squared difference between predicted and true values in a regression task. If multiple samples are passed at the same time, then the mean of the squared errors over the samples can be taken. तो पहले सिर्फ एब्सोल्यूट लिया था, अभी उस एब्सोल्यूट को हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं. अल्टीमेटली सबको साम करके एन से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीन स्क्वायर एरर. ओके, दिस इज ए स्टैंडर्ड लॉस फंक्शन. तुम देखना, आप लोग देखना कि हम मैक्सिमम केस में जो यूज करते हैं वो है आपका मीन स्क्वायर एरर, नॉट एमएई. दिस इज एमएसई, मैक्सिमम टाइम वी यूज. So similarly, you can go through this particular example. Y values are given, y dash given. We are just say 10 minus 10.2 minus say 9.4. जो भी मिलेगा उसको स्क्वायर किया, लास्ट में सबका वैल्यू ऐड करके डिवाइडेड बाय 5. Now you just note down one fact that here we got the error as 1.104, right? Now you calculate MAE for this. Take a screenshot and try to find out MAE for this. Now then tell me who MSC and MAE. What is the relationship between them? Is my question clear? Question समझ में आ गया? Hello, have you got my question? Sir, cover repeat করবো নি? My question is that for that problem, you calculate, just a minute, you calculate MSC as well as MAE. Okay, for these values. Then tell me that if this means what is the relationship between MSC and MAE. Okay. Yes, sir.
मतलब सीधी साधी बात है कि एमएससी और एमएई निकालो वो पार्टिकुलर, इसके तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना तुम लोगों ने, मैंने अभी बोला था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके लिए एमएससी तो निकालो और एमएई भी निकाल के, एमएससी और एमएई का क्या वैल्यू चेंजेस आ रहा है, मतलब दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, यू विल टेल मी। ओके, नाउ लेट्स कम टू सम से प्रैक्टिकल्स। इसे तो हमने ये सारे कर लिया था। ओके, कैन यू सी दिस, इंपोर्ट numpy एस एनपी। ये प्रैक्टिकल को करना है, ठीक है, एक भी मिस नहीं करना है, बहुत सिंपल है। मुझे जल्दी बताओ कोई एक जन के, numpy हम क्यों यूज करते हैं? न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए, राइट। और एक पर्पस क्या होता है इसमें, मैक्सिमम जो जिसके लिए हम यूज करते हैं numpy? एरे। एरे के लिए। वेरी गुड, एरे के लिए। ओके, यहाँ पे आप यू कैन सी दैट हम क्या यूज कर रहे हैं, एरे। क्या डायमेंशन का एरे यूज कर रहे हैं, 1 डायमेंशन, राइट। तो हमने 2 एरे बनाया, राइट। 10, 20, 30, 40, ये क्या है, एक्चुअल जो होना चाहिए। और ये क्या है से प्रेडिक्टेड में क्या है आपका, जो हमारे से मॉडल कैलकुलेट दे के दे रहा है, ठीक है। वॉट एवर द मॉडल इज गिविंग द वैल्यूज। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट एमएससी। क्या फाइंड करना है हमें, एम एस ई। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, ये एनपी डॉट, एक फंक्शन लिया हमने मीन, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, और ये दो डबल स्टार हम किस लिए यूज करते हैं, फॉर, डबल स्टार इज फॉर, एक्सपोनेंशियल। वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल, और आई कैन से, वी कैन से पावर। तो एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड स्क्वायर, राइट। आप इन ये जो है ये वैल्यू के लिए देखो कैसे कैलकुलेट होगा, यू कैन सी हियर 10, 12, 20, 18, 30, 28, 40, 45, इन सब का डिफरेंस निकाल के मीन निकाला जाएगा, राइट। डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करेंगे और उसके बाद मीन निकाला जाएगा, राइट। एंड अकॉर्डिंगली वी विल गेट द एमएसई। कोई डाउट इसमें? ये प्रैक्टिकल बिना देखे आप कंप्यूटर में अभी कर लेना, करोगे सब लोग? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट, हमने फिर से एक सेम टाइप का ही प्रैक्टिकल हमने किया है, और उसमें हम एमएई निकालने की जो है वो फॉर्मूला यूज किया है। तो एमएई में आप जानते हो हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट, राइट। एनपी डॉट एब्सोल्यूट, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। एनपी डॉट एब्सोल्यूट, एक्चुअल वैल्यू तो ये ले लिया, प्रेडिक्टेड वैल्यू है हमारे पास, ये इन सब का एब्सोल्यूट निकाला, उसके बाद मीन फाइंड आउट किया, तो वो हो गया एमएई, देन एमएससी, देन वी ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एमएससी एंड एमएई। ये भी प्रैक्टिकल आप कर लोगे। इसमें भी हम सिंपली अभी तक के सिर्फ नामपा यूज किया है, क्लियर। नेक्स्ट, आप ये प्रोग्राम देखो, मैं जो लास्ट क्लास में समझाया था, मैं आप लोगों को पूछने जा रहा हूं यहां पे क्या कर रहे हैं हम। इंपोर्ट numpy as np एंड इंपोर्ट टेंसरफ्लो as tf। ये दोनों क्या है आपका, numpy एरे है, कोई डाउट इसमें है नहीं, राइट, राइट। तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 0, 0, 2 के लिए 0, 3 एंड 4 के लिए 1 1 वैल्यू। नाउ ये क्या कर रहे हैं हम, व्हाट वी आर डूइंग हियर, मॉडल इज इक्वल टू tf डॉट keras डॉट sequential, tf डॉट keras डॉट layers डॉट dance 8 एक्टिवेशन वैल्यू, tf डॉट keras डॉट layers डॉट dance 1 एक्टिवेशन sigmoid। नाउ मैं पूरा खुश हो जाऊंगा, आई विल बी वेरी मच हैप्पी इफ एनी वन ऑफ यू विल आंसर दिस, दैट व्हाट वी आर डूइंग। क्योंकि मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था ये कैसे क्या हो रहा था। यू टेल मी लाइन बाय लाइन व्हाट वी आर डूइंग हियर फॉर ओनली फॉर दिस पार्ट।
My question is clear to you? Is my question clear to you, what I am asking? You don't need to worry. If you have any problem, you can ask me. Just tell me that whether the question is clear to you or not. Is it clear? Hello? Is my voice coming to you properly? Yes, sir. Sir, Ah, দুটা লেয়াৰ আছে প্ৰথমটো যিটোত 8টা নিউৰন আছে দেন তাত ৰিলু এক্টিভেশ্যনটো হৈছে okay. উইচ হেল্প যোনটোত ছাৰ যিটো থ্ৰুৱেদি এটাত মানে মানে পেটাৰ্ণটো হেৰি কৰা গৈছে দেন ছেকেণ্ডটোত এটা নিউৰন আছে আৰু ইয়াত মানে ছিগমইডটো এক্টিভেশ্যন কৰা গৈছে যোনটোৱে আউটপুট দিব বিটুইন 0 আৰু 1 0 or 1. Very good. Okay, this type of answer, this type of answer make me happy. Okay, so then only I will understand that you are getting it rightly. So he has said correctly, but the first thing is that here 8 neurons we are using, right? So this one is one hidden layer we are using, and this is one we are using this for output layer. I hope it is clear to everybody. Then we have used Adam optimizer, right? Then next loss we have calculated using binary cross entropy, and the matrix we are using is accuracy, right? यहां तक के कोई डाउट नहीं है किसी को भी? Do you have any problem here? Hello. No, sir. Okay. Then यहाँ पे जो epochs 100 and verbose 0 मैं last class में भी बताया था. What does it mean? How they are working actually? How many epochs we have considered? 100, right? So मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं जितने भी तुम लोग हो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो तैयार रहना यू हैव टू बी वेरी मच मींस एक्टिव टू आंसर द क्वेश्चंस ओके अभी प्लीज okay so 100 epochs we are considering and verbose 0 so no particular line by line output you will get at the time of training. Okay, for this 100 epoch, we are considering whole data set in every epoch. And data set that we have taken is this x values and y values from 0 to 4 and this 0 to 1 for this y. Now, from them, it has been trained and ultimately we try to predict for the value 2.5, right? तो ये सारे जो ट्रेनिंग हो गया उसके बाद हमने क्या किया 2.5 के लिए वैल्यू क्या होगा वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश की, राइट? तो at last when we train and try to predict the value, what we have got at the last, क्या मिला ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? What you can see here, tell me the value what you have seen here. 0.26 0.2660 triple 3 5. थोड़ा सा गेस करोगे कि क्यों ऐसा वैल्यू आया? ये एक्स एंड वाई वैल्यूज को देखो उसके बाद जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आ रहा है उसको देखो. देखो 0 के लिए कितना आ रहा है 0 1 2 ये सब के लिए आपका ऑलमोस्ट 0 आ रहा है.
3 4 के लिए नियरेस्ट 1 और हमारा जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है 2.5 it is nearby what 3 yes or no so it should be greater than 0 but should be less than 1 so ये वैल्यू को ये सारे वैल्यू को लर्न करके जो भी मॉडल को पैटर्न मिला उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो आउटपुट आपको दे रहा है ठीक है समझ में आ गया अभी क्या करोगे अभी इस क्लास के बाद तुम लोग ये वैल्यूज को चेंज करोगे एक्स का वैल्यू कुछ और लोगे वाई का वैल्यू कुछ और लोगे एक ऐसा वैल्यूज लोगे जो पैटर्न आप जानते हो सपोज आपने ये पैटर्न फॉलो किया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर आप ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर के जैसा वैल्यू आप यहां पे रखोगे कहा वाई के लिए समझ में आ रहा है बुझ पाया सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं और उसके लिए आप क्या करोगे ये मॉडल को ट्रेन करा के एक कोई भी वैल्यू के लिए से फॉर 5 इसको प्रेडिक्ट करा के दिखाओगे कि क्या आ रहा है वैल्यू बस इतना ही करना है आज का इंटर्नशिप में ठीक है ये जो 3 टास्क मैंने दिया हूं यू विल डू दिस राइट यू विल ट्राई टू कंप्लीट दिस बिफोर 5 p.m. एंड यू विल शो इट टू मी इज दिस क्लियर Yes, sir. okay so that's it thank you I'll check in the group thank you everyone